the very perspective that last many years dealing with entrepreneurs, dealing with people who have jumped into entrepreneurship after being there in the corporate world, after working in organizations, they decided to take the leap of becoming an entrepreneur. तो मैंने जब उनको ऑब्जर्व किया, देखा, तो समझा कि entrepreneur तो बन गए, एक जंप तो ले लेते हैं लोग in the business world, but somewhere leadership is one factor which they kind of overlook, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं. एंड ऐसा लोगों को लगता है कि अगर लीडरशिप पोजीशन में बैठ गए तो लीडरशिप आ जाएगी. एंड आई थिंक दे कुडंट बी मोर रॉन्ग देन दिस थॉट व्हिच दे कैरी. और ये जो थॉट वो कैरी करते हैं कि लीडरशिप पोजीशन पे अगर आ जाएंगे तो लीडरशिप आ जाएगी, नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वो जितने लोग हायर करते हैं या रखते हैं उनके साथ भी यही अप्रोच से डील करते हैं. दैट दे गिव देम प्रमोशंस, दे मेक देम टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट समवेयर दे बिलीव कि अगर उनको हमने प्रमोशन दिया या उनको हमने फ्रॉम अ सेल्स पर्सन वी मेक देम अ सेल्स मैनेजर, फ्रॉम अ प्रोडक्शन गाय वी मेक देम अ प्रोडक्शन हेड, तो उनको ये पोजीशन देने से उनको लीडरशिप आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता. सो टुडेज sharing of mine would be on these lines, that leadership has to be developed, leadership can be developed, and it has to be developed on a daily basis. आज का ये मेरा सब्जेक्ट है. So, as and when you join, we have Vishali coming in, Shivani, welcome to live on AMG on business. So let's move on. It's going to be a quick sharing from my side, and if you feel that you have some insights or you have some questions, you can just type in and shoot across. Let's see how much, what kind of questions come up, and accordingly, I'll see how much I can handle those questions. Chaliye. So I started on this note that leadership is never by position. Leadership is built as you carry the leadership position with you, as you execute the responsibilities of leadership. And the sooner we understand this, the sooner we start working on this, the better it will be for us and for our organization. तो अगर आप entrepreneurs हो और अगर आप leadership position पे हो, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो. So when we say leadership is never by position, it is by execution. Is to understand that जब हम काम करते हैं या हमने काम किया, शुरू किया, so that's when we were, whether we were working in an organization or whether we started our own business, it doesn't matter. तो हमारा काम करने का जो फोकस एरिया था was on some work, was on some activity, और उसके हम माहिर बनते गए. So if you are into IT business, so you started your career maybe with coding and maybe whatever aspect of IT you were handling. तो आप उसमें काम, लैपटॉप में काम करते करते, उस कोडिंग में काम करते करते, या फिर मे बी you were into design, तो आप उसमें माहिर होते गए. And that's how you started. So you got recognition, you got name, fame, money, whatever it was, promotion, based on that ability of yours. Same is the case with somebody else. कोई सेल्स में है तो उसको सेल्स में करते 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 वो सेल्स में अच्छा बन जाता है. कोई अगर परचेज में है तो परचेज में होते होते परचेज में अच्छा बन जाता है. कोई अकाउंट्स में होता है, कोई प्रोडक्शन में होता है. So depending on which area you are in, so we pick up a work, we pick up any aspect of business, और हम उसमें अच्छे अच्छे बनते जाते हैं. Over a period of time, जब हम उसमें अच्छे बनते हैं, then somewhere maybe the boss who's overseeing us, or maybe अगर हम entrepreneur हैं तो हम उसको expand करते हैं काम को. और अगर हम कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारा लीडर जो है वो सोचता है कि क्यों ना इसको हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाए और इसके नीचे हम कुछ और लोग रख दें. Now that's where the leadership game starts. So if you're a leader, leading people, understand this very thing, that आपकी जो अभी तक की एक्सपीरियंस रहा है, आपका अभी तक का जो अनुभव रहा है, it has been based on a certain aspect of work where you become capable, and you were given leadership position not because you could lead people well. Many times this leadership position was given because you did that job well. तो जो आपने अच्छा किया वो उसके बेसिस पे आपको अभी एक नया रोल मिल रहा है, which is absolutely different than the one which you were doing before. तो जरूरी है ये समझना कि the leadership role which I have to play, मुझे उसके बारे में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. It cannot be that मैं
लीडरशिप एग्जीक्यूट करते करते मैं सीख लूं, दैट विल बी एन एड ऑन. बट अगर कुछ प्लस पॉइंट्स, अगर आप कुछ प्लस पहले से सीख लेते हो, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू टू एग्जीक्यूट योर रोल वेल. तो आपके पास मैं 5-6 पॉइंट्स रखता हूं ऑन लीडरशिप. इफ यू कैन मेक देम योर काइंड ऑफ फाउंडेशनल पिलर्स, सो एज एन एंटरप्रेन्योर आप एक अच्छे लीडर बनते जाओगे ना. व्हेन यू हैव अ टीम अंडर यू, the reason you have a team under you is because एक विजन है जिसको आप चेस कर रहे हो, एक माइलस्टोन है जिसके पीछे आप भाग रहे हो, और वो शायद अकेले आपकी बस की बात नहीं है. दैट्स व्हाई यू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन. आप अकेले कर पाते तो आप अकेले कर लेते, लेकिन यू न्यू दैट दिस इज नॉट पॉसिबल अलोन. सो यू गॉट इन योर टीम विद यू एंड टुगेदर you said that let's achieve this goal. Now the moment you have a team with you, the first thing as an entrepreneur you got to do is they will is understand that they will look up to you. They will look up to you because जितना बड़ा गोल हमने रखा हुआ है उतनी मुश्किलात आएंगी, और जितनी मुश्किलात आएंगी तो जो नीचे टीम में लोग होते हैं वो अपने लीडर की ओर देखते हैं कि भाई इन मुश्किलों को कैसे हैंडल करूं, हाउ डू आई ओवरकम दीज डिफिकल्टीज, दीज चैलेंजेस. तो उस समय एंटरप्रेन्योर जो है should be seen, should be visible as a larger than life person. ना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब आपकी टीम ऊपर देखती है आपको कि भाई अभी ये मुश्किलात आ गई, अभी मैं क्या करूं. जैसे एक बच्चा जो है ना, जब वो मुश्किलात में आता है तो वो पापा को देखता है, अपने फादर को देखता है कि भाई अभी मैं क्या करूं. इन द सेम वे अ टीम मेंबर विल लुक अप टू द लीडर एंड द लीडर शुड बी सीन. जब वो देखता है अपने लीडर को तो लीडर ऐसा दिखना चाहिए दैट इज अ लार्जर देन लाइफ पर्सन. इसका मतलब क्या है, उसने अपनी जिंदगी की पर्सनल लीडरशिप को बड़ा अच्छे ढंग से वो जी रहा है, या उसने अपनी अपनी जिंदगी को एक अच्छे ढंग से जिया है, एंड दैट इज कॉल्ड पर्सनल लीडरशिप. सो एन एंटरप्रेन्योर कैन नॉट बी अ पुअर लीडर ऑफ हिज ओन लाइफ. ही कैन नॉट बी सीन एज अ वीक लीडर ऑफ हिज ओन लाइफ, कि उसकी लाइफ तितरी बितरी है, उसकी लाइफ जो है हिली हुई है. So when our team member looks up to the entrepreneur, he should see a person who is in control of his own life, who's in control of his own thoughts, who is kind of having control over his own emotions. उसकी कम्युनिकेशन उसके कंट्रोल में है. सो ये वो बंदा है जो अपनी लाइफ को अच्छा लीड कर रहा है, उसकी हेल्थ उसके कंट्रोल में है, उसकी ओवरऑल जो जिंदगी है वो जब देखता है टीम मेंबर, वो कहता है यार दिस बॉस इज सो सॉर्टेड. एंड जब वो देखता है अपने बॉस को एज अ सॉर्टेड पर्सन, दैट्स वेयर ही स्टार्ट्स बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस कि मेरे मुश्किलों का निवारण ये बॉस करेगा, मेरे चैलेंजेस का आंसर इस इंसान के पास होगा, बिकॉज ये अपनी लाइफ को अच्छा जी रहा है ना. मेनी टाइम्स मतलब मैंने देखा है, out of 10 times 9 times ऐसा देखा मैंने that entrepreneurs they miss out on personal leadership, and without personal leadership you will not be able to build the confidence in your team member. So as an entrepreneur, first is get yourself sorted, get your life organized. One. Number two, this is the first foundation. अभी इसके अंदर मैं जितना डेप्थ में जाऊंगा उतना कम है. So what kind of attributes you should build, what kind of a life you should create for yourself, what kind of an image you should have for your in your own mind about yourself. ये it's a huge subject, but आज का वो subject नहीं है, तो इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ. That first point के साथ, that as an entrepreneur, before you go on to lead people well, ensure you're leading your own life well. Personal leadership has to be of the highest level. जो इंसान खुद को लीड नहीं कर पा रहा है, फिर वो बाकी 5, 10, 15, 20, 50 लोगों को कैसे लीड करेगा. इट्स सिंपल है, राइट. तो जब आप अपना बोलते ना कि when people ask for sorry, I got a bad throat. तो जब entrepreneurs जब मेरे से पूछते हैं कि sir when is the time to expand, so I always say that is your current business being managed by you very well? Is it a cause of concern, right? If it is a cause of concern where things are not organized, then you should not think of starting another business. It's only when you have taken care of this business very well, it's not a pain point for you, you can take yourself out of this business, then you should manage or you should start another business. तो जब एक ही नहीं संभल रहा है
तो फिर बाकी कैसे संभालोगे? इन द सेम वे, जब आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके ताबे में है, तो फिर कोई और माइंड को, जो आपके ताबे में वैसे भी नहीं है, उसको कैसे संभालोगे? सो लीडरशिप स्टार्ट्स विद पर्सनल लीडरशिप, नंबर 1. नंबर 2, you should be a dream merchant. As a leader, you should be a dream merchant. As an entrepreneur, अगर आप लीडरशिप में जा रहे हो, तो आपके पास कुछ सपने होने चाहिए जिसको आप अपनी टीम को बेच पाओ. The team wants to know, the team wants to be sold a dreamland. This is where we will go. And you got to instill hope in them every day. You got to instill hope in them at every corner, every opportunity. कि साहब ये हम लोग इस ड्रीमलैंड पे जाने वाले हैं, ये हमारा डेस्टिनेशन है. You should be able to make them feel wow about that dream. So आप सवाल पूछो खुद से, that are you a dream merchant? Have you been able to sell a dream which is aspiring, which is kind of a source of motivation for your team? Because कोई थके हुए डेस्टिनेशन पे कोई टीम क्यों जाएगी यार? अच्छे लोगों को अच्छा डेस्टिनेशन चाहिए होता है, अच्छे लोगों को एक एक ड्रीम वर्ल्ड में जाने की इच्छा होती है, थके हुए लोगों को थका हुआ डेस्टिनेशन चाहिए होता है. So if you have great guys, and if you really want to bring in great guys on board, then as an entrepreneur who is becoming a leader, you should be able to sell a dream to them. And that dream has to be sold on a regular basis. कि आपने एक माइलस्टोन अचीव किया, तो आपने कहा ओके वी विल मूव फ्रॉम 10 crores to let's say 15 crores, और आप 15 करोड़ पे पहुंच गए. The moment you reach 15 crores, you should have another dream ready to be sold to them. That from 15 crores, we are thinking of expanding. Let's have one more office of ours at a certain location. Another dream is sold. The moment you achieve that dream, then you have another dream which you have to sell to them. And a team loves to be sold because they look up to the leader for direction. But the question you should have in your mind is that क्या आपकी कम्युनिकेशन में वो सपनों की एक झलक दिखती है क्या? क्या आपके एक्शंस में, आपके उनके हर एक इंटरैक्शन में विद योर टीम, डू दे सी यू एज अ ड्रीम मर्चेंट, और डू दे सी यू एज अ पर्सन हु हैज नो होप for the future? Because as a leader, you got to instill hope in your team. And one of the simplest ways to instill hope in people is by showing them a dream which you really believe in, by sharing with them a dream which comes from your heart, and telling them that this is what we were going to do, and continuously sharing with them, continuously working on towards that objective of yours. तो उससे hope build होता है. So I hope you're able to connect with what I've been able to share. So those who logged in late, just wanted to give you this clarity that entrepreneurs, they got to develop and evolve as leaders. They will not become leaders just because they became an entrepreneur. तो आप entrepreneurship में आ गए और आप लीडर बन जाओगे, ऐसा नहीं है. Leadership is a self-cultivated activity. It is something which we pick up, something which we build consciously. बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो by default जिनके अंदर leadership होती है. बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं. Majority of the people, they have to build leadership over a period of time. So just because आप boss हो, आपने business चालू कर दिया, it does not mean you are a leader. You got to build leadership. And उसमें मैंने अभी 2 बातें करी हैं. Number 1, as a leader, you got to exhibit personal leadership. Means आपकी life आपने बहुत अच्छे ढंग से lead करनी चाहिए. And second is, you should be a dream merchant. You should be able to instill hope in your team, and you should be able to make them see a dream which they on their own could not see, which on their own they don't have the capacity to see. You should be a dream merchant. Third point, as a leader, you have to keep on dishing out, you have to keep on giving out opportunities to your people
where they can become better than who they were when they joined you. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही पावरफुल पॉइंट है कि आपका काम एज अ लीडर इज टू कीप ऑन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज. कुछ ना कुछ करिए जिससे आप मौके दे पाए अपनी टीम को, जहां पर वो अच्छे बन पाए कंपेयर टू व्हाट दे वर व्हेन दे जॉइंड. तो जब वो आया तो एक तरह का इंसान था, और वहां से जब वो आपके साथ 2-3 साल 4-5 साल रहा, तो वो आपने जो मौके उसको दिए उससे उसके अंदर की लीडरशिप डेवलप होती रही, इवॉल्व होती रही. I was sharing with one of my team members that how in Chrysalis, हमारी organization में the last 20-25 years, we have had people who evolved as great salespeople, who evolved as great communicators, who evolved as entrepreneurs. और वो ऐसा हुआ क्योंकि हमने बहुत मौके दिए. And in fact, in a small and medium scale industry, ये मौके बहुत मिलते हैं because everything is open. Everything is open. In a big corporate environment, वर्टिकल सेट होते हैं, साइलो सेट होते हैं, तो आप एक ही में काम कर रहे हो, आपको ना लेफ्ट का मालूम ना राइट का मालूम. लेकिन एक इन अ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, आपकी विजिबिलिटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ओर होती है. और उसमें अगर आपका बॉस ऐसा रहा जो आपको मौके देता है टू बिकम बेटर देन हु यू वर, राइट, तो फिर आप अगर उन मौकों को पकड़ लेते हो, द ग्रोथ इज फिनोमिनल. I was sharing this with my team member that in Chrysalis I have pushed people to grab opportunities. I've created opportunities and I've pushed people to grab opportunities. And majority of my team members, they grabbed. तो एज अ लीडर हमारा काम है कि क्या हम वो मौके दे पाए जिसको पकड़ के हमारे टीम मेंबर्स अच्छे बन जाएं और काबिल बन जाएं. एंड व्हेन दे लुक बैक इन देयर लाइव्स, दे फील वाओ, अरे यार मैं ये था, मैं अब ये बन गया. One of my team members, she joined me as an accounts lady way back in 2004, and she had come from a construction world and all her life, and she was uh, not a young lady. तो उन्होंने काफी साल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का रोल किया था, and then she came to us as for accounts work only. But over a period of time, next 6 months, I started giving her responsibilities which were beyond accounts. And I was seeing that whether she's enjoying it or not, whether she's liking it or not. थोड़ा हल्का सा रेजिस्टेंस आया बिकॉज एज होती है, तो एज के साथ इंसान काम सोचता है कि मैं क्या लिमिटेड काम करूं या फिर मैं और नया काम पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं. And there she picked up some admin work, she picked up then some counseling work, she picked up some selling work. And when after 15 years of being with us, when then she hung up her boots and she says, "Abhi MG base ho gaya mera abhi. I have worked a lot and now I want to just think of giving some time to myself." She was one of the best salespeople we had with us. And she said that looking back, I could have never thought in my life कि मैं ऐसा बनूंगी. And I remember one morning she came and she said she had a glow on her face. Now we're talking about a lady who has been एक typical working environment में रही हूँ lady, and बच्चे बड़े हो गए, husband has got retired working in a bank. And then she one morning she comes and she has a glow on her face and she says, मेरे एक relative आए and they met me after a long time and they says, "Hey Priya, you have changed so much. You are the way you communicate, the way you are keeping yourself, the way you are dressing. ये सब तो इतना different than what you were." And Priya says कि मैंने सोचा कि अरे ये क्योंकि आप जब करते हो तो आपको मालूम नहीं पड़ता आप बदल चुके हो. But somebody who's meeting after a long time is able to notice that change. So she shared with me कि मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि ये change हुआ because I'm with Chrysalis and I've become so much better than what I was in all aspects. Not only my job, not only my financials, but मेरे बात करने में, मेरे overall attire में, presentation में, in my thinking, in my ability to control my own life, my own emotions, मैं हर aspect में अच्छी बन गई हूँ. तो मुझे लगता है कि मैंने जब सुना तो I also felt great that as an organization we could do something for her. We could make her, we could shape her into a better person, into a better her. So as a leader, हम सबकी जिम्मेदारी है. If you're an entrepreneur, as an entrepreneur, you have to keep on dishing out. You have to keep on giving opportunities to people
where they can become better, right? So this is the third point. The fourth point, which as a leader, there are many aspects of leadership which you need to develop, but I'm just sharing with you a few fundamentals which अगर आपने वो ध्यान में रखा, आपने वो पढ़ लिए, तो maybe it will help you evolve and develop as a better leader. The next point is you got to ensure that people are growing. And how do you ensure that people are growing under you in terms of their professional life? By tracking the performance. Now, it's not tracking the results only कि आपने भी ये काम किया कि नहीं किया. And normally that's what leaders or entrepreneurs do. They track the results, and results nahi aate, then they have their own ways to handle that. I'm just saying you track the performance with the thought process of correcting the person when you feel that the results or when the performance has not been at par. So when we say you track the performance, means आप उसका परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं बिकॉज यू आर सीइंग दैट पर्सन फ्रॉम अ कोचेस पर्सपेक्टिव, कि अगर आप उसके कोच होते और आप वो बच्चा आपके नीचे लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहा है, कि एवरी डे द पर्सन कम्स एंड डज एंड प्रैक्टिसेस फॉर लॉन्ग जंप, तो आप कोच हैं और आप उसका परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं. तो आप उसका परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं इसलिए नहीं कि आप उसको झाड़ो जब वो गलत हो जाए, इसलिए नहीं कि आप उसको निकाल दो कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है, और मैं इसलिए उसका परफॉर्मेंस, मुझे कैसे मालूम पड़ा वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस को मैंने ट्रैक किया, इसको निकाल दो. You track the performance from a perspective, how do I make him better? How can I, because as a coach you're observing him from outside. वो अंदर काम कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां गलत जा रहा है, कहां सही जा रहा है, बट आप ऊपर से उसको देख रहे हो, क्योंकि आपने भी शायद वो काम करा हुआ है पहले, या आपको मालूम है वो काम कैसे होना है, तो आपने उसको गाइड करना है, आपने उसको कोच करना है, आपने उसको अच्छा बनाना है. And you are tracking his entire performance purely from the perspective of giving him some insights as to how he can do the job better. You're not tracking the performance from the perspective of firing him, from the perspective of removing him from that responsibility, but from the perspective of making him a better professional. बहुत ही मेरा एक it's a very subtle change in observation, a very subtle change in the way you're in your approach, but a very powerful change in approach. Very subtle but very powerful. मैं again repeat करता हूं. You are observing the person's performance. एक होता है from a perspective कि यार ये अच्छा नहीं कर रहा है तो इसको निकाल देंगे, ये अच्छा नहीं काम कर रहा है तो इसको झाड़ देंगे. एक ऑब्जर्व परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने का ये तरीका है. दूसरा तरीका या दूसरा अप्रोच है कि व्हाई एम आई ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस इज इफ आई कैन सी सम गैप एरियाज, मैं उसको गाइड कर पाऊंगा. इफ आई सी सम एरियाज वेयर इंप्रूवमेंट कैन हैपन, आई वुड बी एबल टू गाइड. सो ये एज अ लीडर योर पीपल हैव टू ग्रो एंड डेवलप अंडर यू, राइट? So ये अगर आपने चार fundamentals को रखा, and there are many other fundamentals which you can keep, but today I want to just speak on these four so that you develop yourself on these four aspects. And again, why should you develop yourself on these aspects is because जैसे आप entrepreneur बनते हो, तो entrepreneur बनने का मतलब ये नहीं कि आप leader बन गए हो, आप उसका मतलब है कि आपके पास leadership की जिम्मेदारी आ गई है. तो जिम्मेदारी आती है तो फिर हमें वैसा बनना पड़ता है. So leadership does not come to you just because you are sitting on a leadership position. It will come to you because you are executing leadership through that position. और executing leadership में कुछ leadership के fundamentals आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जिस पे आप जियो बार बार. So I've shared with you these four fundamentals, and I believe that ये fundamentals आपके काम आएंगे and they will help you to evolve and become a better leader. Because एक entrepreneur के पास option नहीं है than to become a better leader, because वो टीम को लीड तो कर ही रहा है और लीड करना ही पड़ेगा. You have not till you evolve into an entrepreneur who does not deal with teams. तो वो समय आता है जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अलग लेवल पे ले जाते हो, where you become the Ambanis of your life or the Adanis of your life, where you are not leading people, you are leading businesses. तो वहां पहुंचने से पहले
जो ये लेवल है जहां पर हम एज एन एंटरप्रेन्योर भी हैं लेकिन हम एज अ लीडर भी हैं। हमें टीम को तो लीड करना ही पड़ेगा, और लीड करना है तो फिर क्यों ना अच्छा करें, और अच्छा लीड करना है तो फिर हमें लीडरशिप के फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। सो this is what I had to share with all of you today. I believe, I feel that these are going to give you some uh, valuable, simple but very valuable inputs, and hope that you all become a better leader. So personal leadership का ध्यान रखिए, right? Be a dream merchant. After every milestone of which you achieve, you set another promised land and you make them see another promised land of which you have thought of. तो ये रिन्यू ड्रीम्स रिन्यू होते रहने चाहिए, ड्रीम्स को लगातार नए नए ड्रीम्स को बेचते रहना चाहिए, राइट? एंड बिकॉज यू बिलीव इन दोज ड्रीम्स, और आप अकेले वहां सपनों तक नहीं पहुंच सकते, तो आपने अपनी टीम को तो वो ड्रीम्स बेचने चाहिए, राइट? And of course, Shadi, the other part is that you have to make them better than what they are. Give them as many opportunities as you can to make them better. And the fourth is you track the performance from a perspective of they becoming better. ये चार aspects पे आप काम करिए, and बाकी फिर मैं कभी किसी और दिन आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है? हाँ जी। So make a great day, and I'll come to you next week with another beautiful sharing on the business side. Till the time, stay alive, stay active, and take your business to the next orbit. Thank you, everybody. God bless. Thank you. Absolutely, Shivani. Leading people will definitely help you, because without people, there's no business. SR Innovation, thank you so much, Shali. God bless, and see you next week.